thorough newspaper analysis for 28th of March, which is brought to you by LawSikho. Now let's start with the agenda for today. At the very outset, we're going to have a look at some important national and international news updates. This is going to be followed by two legal news updates, and at the very end, we have an editorial to discuss, the title of which is In the Name of Security. ये particular editorial सुप्रीम कोर्ट की फ्राइडे की रूलिंग के रिस्पेक्ट में है, by virtue of which सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सेक्शन 10 ऑफ द यूएपीए इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मीनिंग देयरबाय अगर कोई पर्सन इज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is notified by the government to be banned or unlawful, so by virtue of this mere factum of being a member of such an association or organization, the person is going to be guilty, is going to be considered an offender under the particular provision of the UAPA, which is section 10. With this, let's start with the TNA for today. पहली अपडेट हमारे पास स्पोर्ट्स वर्ल्ड से हैं. दिस इज़ इंडीड ए वेरी हिस्टोरिक मोमेंट एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि 22-year-old प्रॉमिसिंग यंगस्टर नीतू गंगस, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती हैं, शी अलॉन्ग विद experienced hand Swati Bora, both of them, they've overcome their tough opponents in the categories of 48 kg and 81 kg respectively to claim their maiden titles in the World Women's Boxing Championship at the KD Jadhav Hall. As far as Nitu is concerned, she defeated her Mongolian counterpart to fetch the gold medal. Now she has become the 6th to conquer the World Championships, 6th Indian. As far as the other 5 Indians are concerned, unki list, if I were to take the names, first would be 6-time champion Mary Kom, followed by Sarita Devi, Jenny RL, Lekha Casey and Nikhat Zareen. With this, let's move to the next update. So the Finance Secretary TV Somanathan, he is going to head a panel on pension schemes, with the demand growing for the old pension scheme with assured benefits. The centre announced to set up a committee headed by Finance Secretary TV Somanathan. Now see, before we proceed, हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि what is old pension scheme and what is new pension scheme. अगर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस दोनों में समझा जाए तो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन का फंड आता था वो सोली गवर्नमेंट फंडेड होता था, जबकि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें एक मिक्सचर है, तो एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है एंड गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है. 2004 के बाद में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू इसीलिए कर दिया बिकॉज जो हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर था, जो गवर्नमेंट फंड्स था, उस पर ये बहुत ही हैवी था एंड इसीलिए ये फाइनेंशियली वायबल नहीं था टू प्रोवाइड फॉर द पेंशन सोली बाय द गवर्नमेंट. तो इसलिए हम न्यू पेंशन स्कीम पे शिफ्ट हुए थे. हाउएवर अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि कुछ गवर्नमेंट्स अपने पॉलिटिकल एजेंडाज में, मैनिफेस्टोज में ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्विच टू द ओल्ड पेंशन स्कीम बिकॉज ऑफकोर्स वो पब्लिक को थोड़ा प्लीजिंग लगता है, इसमें अश्योर्ड बेनिफिट्स हैं. Now there are two governments in particular, Rajasthan and Chhattisgarh. They've already moved to the old pension scheme, and Punjab is also in the road to to join the league of these two states. Now, seeing this growing demand for old pension scheme, government ने the center has announced to set up a committee जिसके head होंगे finance secretary, and इसका purpose है to explore ways to salvage pension reforms in our country by treading a middle path between the fiscally imprudent old pension scheme. Why fiscally imprudent? क्योंकि ये बहुत ही एक्सचेकर पे हैवी हो रही थी एंड गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के कारण डगमगा रहे थे, एंड द रिफॉर्म ओरिएंटेड नेशनल पेंशन सिस्टम. Let's proceed to the next update. This is from the world of tech because the Intel co-founder of Intel, who is Gordon Moore, he has passed away. He is co-founder and former chairman of Intel Corporation, which is the California semiconductor chip maker that helped give Silicon Valley its name. He passed away on 24th of March at his house in Hawaii. Moving on to the next scheme or the update in the national segment, which is with respect to the Aravalli Green Wall project. See, Aravalli Green Wall project, it is a part of the Union Environment Ministry's vision to create green corridors across the country to combat land degradation and desertification. 4 ऐसे states जहाँ से अरावली रेंज का पूरा land और bandwidth है, which is Haryana, Rajasthan, Gujarat, Delhi. These states are going to be targeted. This project will involve planting native species of trees and shrubs along with rejuvenating and restoring surface water bodies such as ponds, lakes and streams. ये जो अनाउंसमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वो करी गई थी यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा, हु इज श्री भूपेंद्र
वीरेंद्र यादव। अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम या प्रोजेक्ट की स्कीम नहीं रहते प्रोजेक्ट इसके अगर हम इसके एजेंडाज या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इट इज़ टू इम्प्रूव द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अरावली रेंज, to prevent eastward expansion of Thar Desert, and to reduce land degradation by creating green barriers that will prevent soil erosion, desertification, and dust storms, and very importantly, to become significant in India's commitment under various international conventions such as the United Nations Convention on Combating Desertification, Convention on Biological Diversity, and the UN Framework Convention on Climate Change. This is also going to enhance India's image as a global leader in environmental protection and green development. With this, let's move to the next update. This is also a historic moment because जो पहला women's premier league अभी conduct या organize हुआ rather, उसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को defeat करके they have become the first winners of the inaugural WPF batch of tournament. Mumbai Indians etched their name in the history book by becoming the first champions of the Women's Premier League, led by India captain Harmanpreet Kaur. Mumbai Indians defeated Delhi Capitals by 7 wickets. Moving on to the next update, India is going to host the Shanghai Corporation meet in Delhi in July. This particular announcement it was made by the Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi. She stated that for the upcoming meeting, most of the foreign ministers of the SCO members they have stated their confirmation for their participation, but दो countries की confirmation अभी आनी है, which is China and Pakistan, that is awaited. Moving on to the next update from the defense segment. तो हाल ही में आर्मी चीफ ने प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड कॉन्फर करा है 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स में. सी द आर्मी चीफ was General Major Manoj Pandey. He presented the prestigious president standards to 4 armored regiments in the Indian Army at an event which was held in Suratgarh military station in Rajasthan's Ganganagar district. The President's Standard or Nishang, it was presented to 4 regiments, the name of which are 49 Armored Regiment, 59 Armored Regiment, 53 Armored Regiment, and 54 Armored Regiment. Here I have a question for you. Recently हमने अपने TNA में भी कवर किया था. इंडियन नेवी ने 2 नई ट्रॉफीज अनवील करी है एंड आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ दीज 2 ट्रॉफीज एंड ऑल्सो इन हुज मेमोरी in whose for the celebration of or honoring the birth anniversary of whom these particular trophies were unveiled. Kindly put your answers in the comment section. Moving on to the international segment, तो हाल ही में former Brazilian president, she has been elected unanimously as the president of the New Development Bank. Former Brazilian president, she is Dilma Rousseff. She has been unanimously elected as the head of New Development Bank. अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एस्टैब्लिश इन 2015 इट्स अ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय 5 ब्रिक्स नेशंस एंड ब्रिक्स नेशंस कौन से हैं ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका. शी इज गोइंग टू रिप्लेस अनदर ब्राज़ीलियन बाय द नेम ऑफ मार्कस ट्रॉयजो. आई ऑल्सो हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. रिसेंटली हमने हमारे TNA में कवर की थी ये अपडेट. न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने एक नए मेंबर को वेलकम किया है. दे हैव अनाउंस्ड द जॉइनिंग ऑफ ए नेशन एज द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स बैंक. काइंडली पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एज टू विच कंट्री इज दैट पर्टिकुलर नेशन. Moving on to the next update, UAE Food Bank launches initiative to eradicate food waste. UAE Food Bank, it launched initiative to eradicate food waste and to contribute 3 million meals during Ramadan. This initiative is in collaboration with various partners and this is to distribute 3 million meals and food parcels to disadvantaged individuals and families during Ramadan. Moving on to the another update that we have in the international segment, South Africa scripted a record run chase in T20 International after they chased down 259 runs against West Indies. And with this, we've come to the legal segment
For today, the first update is from the Honorable Apex Court, wherein the top court has held that accused cannot claim right of hearing before registration of FIR. The top court held that an accused cannot claim to have a right of hearing before the registration of an FIR, and that principles of natural justice, they are not applicable at the stage of reporting of a criminal offence. Moving on to the next update, the name of the particular case is State Bank of India versus Rajesh Agarwal. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज a right to be heard, which is Audi Altrum Partum, it must be read into the circular issued by the RBI, Reserve Bank of India, on the classification of bank accounts as fraud accounts. कोर्ट ने ये बोला है कि क्लासिफाई अगर आपको किसी अकाउंट को करना है एज फ्रॉड, तो उससे पहले जो अकाउंट होल्डर है उसको एक राइट टू बी हर्ड, एक हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए. वाई? बिकॉज terming an account as fraud, it has several criminal and civil ramifications for the borrowers, and it amounts to blacklisting of the borrowers. Therefore, it is a must that opportunity of hearing is granted for the borrowers under the master directions on fraud. And with this, we've come to the editorial segment for today, the title of which is In the Name of Security. So now let's proceed with the editorial. See, as far as the editorial is concerned, तो उसका structure जो हम follow करने वाले हैं वो ऐसा है कि सबसे पहले तो we'll of course understand the why of this article and we'll get into the Supreme Court's ruling of Friday. उसके बाद हम ये देखेंगे कि active और passive membership में क्या difference है, जो कि 2011 के decisions में भी held किया गया था. उसके बाद we're going to have a look at how there is a difference between UAPA एंड टाडा, दीज टू लेजिस्लेशंस, इनमें क्या डिफरेंस है जो कि 2011 की रूलिंग्स में भी दर्शाया गया था, एंड हाउ दैट इज डन अवे विद इन द रीसेंट रूलिंग. एंड फोर्थली हम ये देखेंगे कि मेंबरशिप जो है वो उसको असर्टन कैसे करेंगे, कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बीइंग अ मेंबर, क्योंकि कोई शीट तो मेंटेन करके नहीं रखते अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है कि दीज आर द मेंबर्स. तो हाउ इज द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल, how is it going to identify that these persons are the members. एंड इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजंस भी है, जो कि ऑथर ने इसलिए साइड किया कि कैसे ये जो वेग सा कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप, ये मिसयूज कैसे हो सकता है. उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय अ लिटिल डिस्कशन ऑन व्हाट वाज हेल्ड इन वन ऑफ द रूलिंग्स ऑफ द 2011 एंड विच ऑल वर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जिन पे रिलायंस प्लेस करी गई थी. क्योंकि अगर आप इफ़ यू वुड रिकॉल तो इन यस्टरडेज TNA वी डिस्कस कि वन ऑफ द ग्राउंड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था वो ये था कि 2011 के डिसीजंस पे हमने लार्जली US सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पर रिलाई किया था, विच इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इंडिया में जो डेमोग्राफिक है, जो सिचुएशन है, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट दैन US. And then at the very end, we are going to have a look at how states across the world, they are already grappling with the issue of countering terrorism. And इस पूरे डिबेट एंड डिस्कोर्स में अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जहाँ पे स्टेट एजेंसीज को बहुत सारी पावर्स मिल जाए, तो वो कैसे स्टेट के जो एफर्ट है टू काउंटर टेररिज्म उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हो सकते हैं. नाउ विद दिस लेट्स स्टार्ट विद the TNA for today. See, let's understand the why of this particular article at the very outset. So see, on Friday, a 3-judge bench of the Honorable Supreme Court in the case of Aravalli versus State of Assam, it held that mere membership of a band association, it is sufficient to constitute an offence under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. So as far as the author of this editorial is concerned, उनका ये मानना है कि ये जो decision है, it is a severe blow to the fundamental principles of fundamental justice. This verdict has done away with the distinction between active and passive membership of proscribed organization, which has been the base for court ruling since 2011. So author का ये कहना है कि जो 2011 से कोर्ट की रूलिंग का बेसिस चलता आ रहा है, which is कि एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन being a mere passive member, आप कुछ नहीं कर रहे हो, just being a member, and being an active member जिसमें कि आप efforts लगा रहे हो, you are giving physical manifestation to your intention, जो कि यह है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोस्क्राइब्ड है, ब्लैक लिस्टेड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को फर्दर करने के लिए यू आर पुटिंग इन सम एफर्ट. तो इनमें जो ये है, इस जजमेंट के बाद डिस्टिंक्शन को वैनिश ही कर दिया. Now see further, the editorial talks about the fact कि ये जो judgment है, it is fraught with the risk of making it legal for agencies, state agencies, to act lawlessly while claiming to fight terrorism and preserve the state security. तो क्योंकि अब इसमें mere being member, you
आर गोइंग टू बी हेल्ड एज एन ऑफेंडर, तो स्टेट एजेंसीज के पास बहुत सारी पावर हो जाती है, और इससे क्या है कि मिसयूज का स्कोप भी बहुत सारा हो सकता है। तो स्टेट एजेंसीज ये कह सकती है कि वी आर डूइंग अ सर्टेन एक्शन, वी आर टेकिंग एन एक्शन इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बट जबकि वो एक वेंडेटा को भी फर्दर कर सकता है। एंड लास्ट देन द एडिटोरियल गोज अप टू डिस्कस दैट आउट ऑफ दोज थ्री डिसीजन जो 2011 के थे, फर्स्ट इज अरूप यूएन वर्सेस स्टेट ऑफ असम, सेकंड इज श्री इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, एंड स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रानी। तो इनमें द थर्ड केस विच इज रानी, द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रानी, इस जजमेंट में एक नैरो कंस्ट्रक्शन दी गई थी ऑन सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ऑफ द यूएपीए, जबकि जो दोनों और डिसीजन है अरूप एंड इंदिरा दास, उनमें नैरोली कंस्ट्रू किया था सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ द टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम शॉर्टली टाडा भी बोलते हैं। तो अगर इफ वी हैव अ केयरफुल लुक एट दीज टू सेक्शंस ऑफ दीज टू डिफरेंट लेजिस्लेशंस, सेक्शन 10 जो यूएपीए का है, it punishes membership of unlawful organization, while section 3 subsection 5 of TADA, it penalizes membership of a terrorist organization. फर्दर जो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 टाडा का है, इट इज सिमिलर टू सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए, जो कि प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन। सो इन एसेंस क्या है कि सेक्शन 10 जो है एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 टाडा का है, these do not deal with the same subject matter, but the court has set aside the reading down of both sections, which is section 10 of UAPA and section 3 subsection 5 of TADA, which are two different things. UAPA penalizes terrorist act and unlawful acts differently. Further, the author goes on by saying that by abolishing the distinction between active and passive membership under section 3 subsection 5 of TADA, the court has obliterated the requirement of mens rea from both membership of an unlawful organization and membership of a terrorist organization. This makes the ruling legally incoherent, and there is a mismatch between the verdict's reasoning, which focuses on membership of unlawful association, and its conclusion. So essentially author ये कह रहे हैं कि जो section 3 subsection 5 टाडा का है, उसमें जो membership है to being a member of an unlawful organization and membership of a terrorist organization, उसमें जो requirement है of mens rea, having a criminal intention, guilty mind, it has been obliterated altogether. And with this we have come to the second limb of the editorial का जो discussion था, which is how do we identify the whether a particular person who is an accused is a member or not. So in this respect the author says that banned organizations, they are not known to keep a registry of their members' names, address, phone numbers and other details. Even lawful organizations जो है, they fail to do so. So how can we say and how would the court or any agency conclude who is or continues to be a member of a banned association even after the entity is banned? In most cases membership would be inferred. अब उस inference का तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा, वो नहीं दिया है जजमेंट में, एंड इसी के रिस्पेक्ट में इसकी जो रैमिफिकेशन हो सकती है, उसका कितना मिसयूज हो सकता है, इसी के रिस्पेक्ट में एक केस हाईलाइट किया है जिसमें कि 15 people, all young tribal women and men, they were charged as members of the Communist Party of India, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करी गई थी। एंड उनका बेसिस क्या था, उनको क्यों चार्ज किया गया था, क्योंकि उनके पास कुछ प्रोपेगेंडा लिटरेचर पाई गई थी in the form of books, articles and pamphlets, and in 15 people who were charged, they did not actively participate in any form. ना ही उन्होंने स्लोगनिज्म में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, ना ही उन्होंने किसी और तरीके से किसी भी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी से एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं दिया जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनका क्रिमिनल इंटेंशन था। स्टिल दे वर चार्ज। तो इस रिस्पेक्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया था दैट सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए, विच इज सिमिलर टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ टाडा, making membership of a terrorist organization punishable with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life. It was widely worded, and the court ruled on Agarwal and Ranif ruling that such membership cannot be passive. Now see, as far as the 2011 ruling in the case of Agarwal that is concerned, the Supreme Court ruled that mere membership of a banned organization, it will not incriminate a person unless he resorts to violence or incites people to violence or does an act intending to create disorder.
तो सुप्रीम कोर्ट में एसेंशली यहाँ पे डिस्टिंक्शन कर दिया कि मेयर मेंबरशिप जो है इट विल नॉट इंक्रिमिनेट अनलेस एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन फॉर्म ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस और इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस और डूइंग एनी अदर एक्ट जो कि एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दे। और इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का जिस पे रिलायंस देखी गई थी, वो है ब्रेंडनबर्ग वर्सेस ओहियो एंड इसमें डिस्टिंक्शन करी गई थी बिटवीन एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट। The Supreme Court of US held that mere advocacy it is not per se illegal. It will become illegal only if it incites imminent lawless action. And in case of Rani, another Supreme Court decision, it was cited and the name of that particular case was Scales versus United States. उसमें फिर distinction करी गई थी between active knowing membership and passive mere nominal membership of a band association. And in the case of Elfbrand versus Russell, it was ruled by the Supreme Court of US that guilt by association has no place in penal laws. With this, let's have an understanding of how many organizations as of yet government has listed as unlawful or terrorist organizations. So see, अब तक तो 44 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हमने लिस्ट आउट कर दिया है एज टेररिस्ट एंड 13 को हमने लिस्ट आउट करा है एज और नोटिफाई किया है एज अनलॉफुल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। With this, let's understand the last limb of the editorial कि इसके ramification क्या होंगे in countering terrorism. So the editorial says that states worldwide they are already grappling with defining terrorism, terrorist activity or terrorist groups with some precision to protect against the improper stigmatization of those inappropriately labeled as terrorist. क्योंकि of course जिनको inappropriately label कर दिया जाता है as terrorist तो उसके साथ बहुत सारी ramifications आती है in law and otherwise also. So mislabeling it dilutes effort of combating actual terrorism. Instead of being outliers, the three previous ruling of 2011 they are in accordance with strict judicial interpretation in every liberal democracy of what constitutes terrorist and unlawful activity or being a member of a terrorist or unlawful activity. The author ends the editorial by saying that the Supreme Court has effectively granted agencies license to ensure unsuspecting citizens with its latest ruling. With this, we have come to the end of the TNA for today. अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय LawSikho या इस TNA स्लाइड्स का एक्सेस चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल यूजिंग द लिंक विच इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं. दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस यू वांट टू गेट इन टच विद LawSikho. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पिछले TNA का क्विज है, डेली क्विज, इट इज़ going to be attached to the description of this video. Apart from this, I would like to take names of 3 students जिन्होंने पिछले TNA में जो क्वेश्चन था हमारा मनी बिल के रिस्पेक्ट में उसको करेक्टली आंसर किया. वेल डन. These 3 students are Shreya Roy, Pratibha Singh and Pooja Vakani. I would encourage all of you also to attempt the daily quiz and also put your answers in the comment section for the questions that we pose in this today's TNA. Thank you for being with us.